नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज टैन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय इनकम सोर्सेज को लेके। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम व्हिच आई अर्न मनी एज ए फ्रीलांसर। नाउ बहुत सालों पहले, मतलब बहुत साल तो नहीं, 3-4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे, वेयर द टाइटल ऑफ द वीडियो वाज 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। Now I'm going to repeat the same thing, but now the time has changed, the income sources have changed, okay, a lot of things have changed, so I think this is a good time to talk about it. Also in 2020 हम लोगों ने बहुत सारा ऊपर नीचे चीज़ें देखें, बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव देखें। नेगेटिव ही ज़्यादा है एक्चुअली 2020 में। सो इन दिस टाइम, एट दिस टाइम, इन दिस पर्टिकुलर ईयर, what are the different sources from which I'm earning as a freelancer? That's what we are going to talk about in this video today. So इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ go ahead and subscribe because I create this kind of videos very regularly. Thanks a lot for watching. Let's start the video. Welcome back. So before getting to my 7 sources of income, let's talk about why you need multiple sources of income. Why एक source या दो sources of income are not enough for your freelancing career or any kind of career that you have. ठीक है, बहुत सालों पहले वॉरेन बफे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि you should not keep all your eggs in one basket, which means all your efforts should not be put in one source of income. ठीक है, earning from one source. Something happens to that particular source, your entire income will go for a toss. That's the reason you should have different income sources. So that means that you should put different amount of efforts in different sources to earn from them. ठीक है, फिनेंशियल फ्रीडम और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अलग अलग सोर्सेज से इनकम करो और अर्न करो। तो इस वीडियो में हम वही लेके बात करेंगे। So freelancing marketplaces are still my first and biggest source of active income. मैं बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में काम करता हूँ, आपको पता होगा। मैं फाइवर में, अपवर्क में, पीपल पर आवर में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मैं काम करता हूँ एज ए फ्रीलांसर। सो दैट इज माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। द सेकेंड सोर्स ऑफ एक्टिव इनकम इज ऑनलाइन टीचिंग। मैंने अपने चैनल में बहुत बार आपको वीडियो बना के बताया कि कैसे आप ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो, एंड इफ यू हैव नॉट चेक दोज वीडियोस यू कैन गो टू द चैनल, स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड दोज वीडियोस। सो ऑनलाइन टीचिंग इज माय सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ एक्टिव इनकम। The third source of income is blogging. Blogging is obviously a passive source of income, and that income comes through normally AdSense and from some sponsored blog posts. ठीक है, so that is my third source of income. The fourth source is also a passive source of income, which is income from YouTube videos, like the video that I am creating right now. The fifth source, which is also another passive source of income, is through online courses. आपको पता होगा, I have some online courses on Udemy, so I earn from them as well. So that is my fifth source of income. Now the sixth and seventh sources of income are mutual funds and cryptocurrency. Now I'm investing in this mutual fund for a short time now, and I've learned a lot about this in the past 6-8 months, okay, before I started investing. और पढ़ाई करने के बाद, समझने के बाद कि कैसे एक्चुअली वो काम करता है, even though I was seeing that the market was going up when I was actually studying, and luckily when I was ready to put in my money, put in the investment that I wanted to, the market started falling down. It happened like 5-6 months back, आपको पता होगा। तो तभी मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करके मैंने वहाँ पे डाला था। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो प्लीज़ पहले पढ़ाई कर लीजिए। सेम गोज ट्रू फॉर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस, जैसे सबको पता होगा। बिटकॉइंस के बारे में मैंने पहले ही बताया था, मैं पहले भी बहुत इन्वेस्ट किया था बिटकॉइंस में, लेकिन बीच में बिटकॉइंस बैन हो गए थे इंडिया में। सो फॉर दैट रीजन, फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, आई वॉज नॉट अर्निंग फ्रॉम दैट, ओके, whatever. So those are the two other sources from which I earn money, but these are
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये आपको समझना पड़ेगा कि दीज आर लॉन्ग टर्म एंड आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम देम एवरी मंथ, ठीक है, आई एम इन्वेस्टिंग इन देम, मे बी आई एम ऑल्सो विड्रॉइंग व्हेन एवर आई वांटेड टू, बट देन इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है बिटकॉइंस में या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में, आपको पहले पढ़ाई करना है, इसके बारे में जानना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो दोज आर द 7 different sources of income that I have at present. Now that you know what are the 7 sources of income of mine, you have an idea of how you can earn as well. Now there are different sources also. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं शायद 10, 12, 14 काम अलग अलग करता हूँ, लेकिन मुझे अर्निंग्स सिर्फ 5, 6, 7 सोर्सेस से ही होते हैं। सारे जो सोर्सेस है मेरे और सारे चीज़ें जो इसमें मैं काम करता हूँ उसमें से मेरा अर्निंग नहीं होता एज ए फ्रीलांसर, राइट। तो आपको भी वैसे ही चूज करना है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको 7 सोर्सेज ही होना पड़ेगा। एटलीस्ट आपके पास 3-4 सोर्स होने चाहिए जहां से आप एक्टिवली पैसा कमा सकते हो, कमा रहे हो, ठीक है। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम एंड दिस पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम, please feel free to watch my videos. I have made a lot of videos. You can go to my blog theindianfreelancer.com. वहाँ भी मैंने बहुत बेसिक्स से लेके बहुत एडवांस लेवल तक के बहुत सारे पोस्ट लिखे हैं, बहुत सारे कंटेंट मैंने शेयर किया है, जहाँ पे यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम सोर्सेज एंड हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम एक्टिव सोर्सेज एंड फ्रॉम पैसिव सोर्सेज। यहाँ जैसे मैंने बताया, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ या फिर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, ये सब मेरे एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम है। और जहाँ पे मैंने बताया ब्लॉगिंग के बारे में, यूट्यूब के बारे में, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ये सब मेरे कुछ ई बुक्स भी हैं, वो भी ऑनलाइन ही है। तो इन सब से जो इनकम होता है वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो एक्टिवली इनकम नहीं हो रहा है। तो इन सब के बारे में अगर और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप क्वेश्चंस कर सकते हो और मेरे वीडियोस पुराने देख सकते हो, वहाँ भी आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चंस है वीडियो के बारे में और इफ़ यू वांट टू नो समथिंग एल्स, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. I hope you like this video. If you did, please give me a like and don't forget to share this video with your friends and family. अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, please go ahead and subscribe because I create this kind of videos very regularly. Thanks again for watching. This is Stan signing off from the Indian Freelancer YouTube channel. मिलते हैं अगले वीडियो में. Take care. Bye bye.